Hello students, today we will see position vector and displacement vector. We already see in chapter number 4 position vector and displacement vector. What is the difference between these two theory? Here in this topic of position vector and displacement vector, we will see the components of position vector in xy plane, components of displacement vector in xy plane. Okay, so here one object is at point P, so its position vector can be drawn with the help of drawing line, straight line from origin of coordinate system to that point P with an arrowhead at point P. So here we get the position vector R. ये position vector क्या हो जाएगा? R मिल जाएगा. Now if I am drawing projection of this position vector on x axis and y axis, then you can see that over here x axis और y axis में हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट मिलेगा. सेम y एक्सिस पे क्या मिलेगा? पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट मिलेगा. ठीक है, तो आप उल्टा अगर बोलोगे यहाँ पे x कंपोनेंट है, यहाँ पे y कंपोनेंट है, ठीक है, और हम लोग पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर r क्या होगा? r होगा xi प्लस yj. ठीक है, so here we can say a position vector of a particle, or you can say of an object at point P in xy plane, is represented by a position vector r, is, or you can say given by position vector r is equal to xi cap plus yj cap, where x and y are coordinates of position vector along x axis, or you can say in the direction of x axis having a unit vector I cap along x axis and y axis respectively. Okay, now let's see the displacement vector over here. Now here you can see that particle is moving on this curved path. Okay, like particle is moving on a curved path as shown in figure. Okay, let position of particle is at point P at any time t, and position of particle is P dash at any time t dash. So here position vector at time t is what? R, and r dash is the position vector at time t dash, okay, of an object which is situated at point P dash. So here let particle, or you can say object, okay, is at point P at time t, and at point P dash at time t dash. So here you can see that, so here r and r dash is position vectors, is position vector of this particle or object at time t and t dash respectively. Okay, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल जब यहाँ पे था कुछ टाइम बाद, मतलब डेल्टा टी इंटरवल के बाद, ठीक है, वो पी से कहाँ पे चला गया? पी डैश पे चला गया. ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन उसकी पी बोल सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर आर डैश हो गया. फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर देखे तो वो पी डैश है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? आर डैश हो गया. तो अगर पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, पोजीशन वेक्टर आर के कोऑर्डिनेट निकाले, तो पोजीशन वेक्टर आर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे, एंड सेम एज आर डैश क्या होगा? यहाँ पे देखो ये पोजीशन वेक्टर आर डैश है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम लोग. ठीक है, तो आर डैश को लिख सकते हैं
x dash I cap plus y dash j cap, where x dash and y dash are coordinates along x axis and y axis of position vector r dash over here. ओके, सो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, इट इज अ वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन दिस डायरेक्शन विच एरो हेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन. ओके, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. यू कैन से इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर हो गया डेल्टा आर. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर we can say delta r is equal to what, r dash minus r, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. अब यहाँ पे देखो आपके पास डेल्टा आर डैश है, वो कितना है वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर. अब यहाँ पे देखो आर डैश क्या है, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे. सो वी कैन राइट एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस एक्स आई प्लस वाई जे. ओके, so here I can write from the analytical method we know that a resultant component, okay, or you can say components of resultant vector is equal to what, corresponding component of that two vector which is over here r dash and r. तो अगर यहाँ पे डेल्टा आर नहीं चाहिए तो डेल्टा आर के दोनों कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई एक्सिस पे. ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखो x कंपोनेंट अगर अलग करते हैं, ठीक है, तो r डैश का यहाँ पे देखो कंपोनेंट x डैश है, यहाँ पे x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x डैश माइनस x आई कैप, ये दोनों में से आई कैप कॉमन कर दिया, प्लस यहाँ पे देखो ये y डैश माइनस y क्या हो गया j कैप. तो x डैश माइनस x डैश इज अ फाइनल पोजीशन इन x डायरेक्शन, x is the initial position in x direction, so we can say it is a displacement delta x, okay, in x direction. And here y dash minus y same as becomes displacement in y direction delta y j cap. तो आप देख सकते हो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो आपका क्या हो गया डेल्टा x हो गया इन दी x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन. और सेम यहाँ पे देखो ये इनिशियल पोजीशन y थी, फाइनल पोजीशन y डैश है, सो डेल्टा y इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. So here we can say position vector delta r is equal to what, delta x I cap plus delta y j cap, where delta x we can say where delta x is equal to what, x dash minus x, and delta y is equal to y dash minus y. Okay, so it is the displacement in x direction and y direction respectively. So here in this theory, we represent the position vector and displacement vector in terms of its component along x axis and y axis. Okay.